सँगै सहर जाउँ भन्दा रोएर मान्दै मानिनस् सँगै सहर जाउँ भन्दा रोएर मान्दै मानिनस् भगाई दूर देश लैजान तैले कहिल्यै जानिनस् जब म चढे गाडामा अन्तिम पल्ट दिए हात तलाई विपल प्यारो भो मलाई तान्दै तानिनस् अब त एक्लै खेत खन अब त एक्लै माछा मार अब म तलाई पर्खन्न अब म देहात फर्कन्न सुन रे स्यारा आँसुको इनार जमेनी प्यार मेरो सच्चा छ पेट में माली को बच्चा छ आँसुको इनार जमेनी प्यार मेरो सच्चा छ पेट में माली को बच्चा छ अब म जान्छु थानामा अब म जान्छु अदालत सरकार बस्ने सहर हो यो मैले जित्ने पक्का छ अब त एक्लै घोकेटी अब त एक्लै माघी मान अब म तलाई पर्खन्न अब म देहात फर्कन्न सुन रे स्यारा धन्यवाद। धेरै धन्यवाद श्रवणजीलाई। अब म बोलाउन चाहन्छु मिस ठाकुर बेलवासीजी। धन्यवाद। शहरमा मान्छेको भिडमा सधैँ एक्लै जङ्गलबाट बस्ती पसेको चितुवा जस्तो शहरमा मान्छे आफैले आफैलाई लखेटिरहेको हुन्छ। घामका किरण जस्ता तीव्र गतिका आकाङ्क्षा र तनावहरूको कोर्रा सहेर आकाशबाट खस्दै गरेको तारा जस्तो शहरमा मान्छे कति बेला मान्छेबाट पशु बन्छ, पशुबाट मान्छे, उसैलाई थाहा हुँदैन। शहरका मान्छेमा मुटु हुन्छ तर दुख्दैन, आँखा पनि हुन्छन्, घाउ चोट पीडा देख्दैनन्, ओठ भएका मान्छे पनि हुन्छन् तर हाँस्दैनन्। समयमा चालु डाक्टरले सफा गरिदिएका दुईवटा कान पनि हुन्छन्। शहरका मान्छेमा आफ्नो प्रशंसा बाहेक केही सुन्दैनन्, चित्कारले आनन्द दिन्छ उनीहरूलाई। शहरका मान्छेसँग बलिष्ठ हात हुन्छन्, लडेकालाई उठाउन होइन थपडी बजाउन। कस्कुट जस्ता खुट्टा पनि हुन्छन्, बाटो बिराएकालाई सघाउन होइन ओह्रालो झर्दै गरेकालाई लखेट्न। नाक पनि हुन्छ शहरका मान्छेको अनुहारमा तर हत्तपत्त देखिँदैन, लाज लुकाउन नाक सधैँ छोपिएकै हुन्छ शहरको मान्छेमा। धन्यवाद। धन्यवाद ठाकुरजी। May I now call for Ms. Yukta Vajracharya. She is the corresponding with Republican National League. Namaste सबैजनालाई. Good afternoon, honorable members of the dais and everyone present here. मैले चाहिँ नेपालीमा कविता लेख्न कोसिस गर्दा अलि नराम्रो सुनियो, सो अहिलेलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमै कविता लेखेर मन बुझाइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक होम हो। It's about why we all are here in Nepal, despite all the frustrations that we see, despite all the things that is going wrong, why we still call this place our home. All I can see from outside these rose-colored glasses are neatly aligned boxes with big windows that breathe despair, big gates that breathe suffocation, and walking, talking sticks inside them that do not breathe at all. The air here crushes, murders, stifles my every thought, and those cold faces with hypocrisy painted all over them, they suck the life out of me, vacuum me,
But of course, you don't hear the noise. You're too deafened by the clinking of the coins and the rough strokes of the ugly green. So here I am, wishing that I could go back to that place that I call home. Go back to that place that you refuse to call home. Home, where poverty rings like temple bells and smells like a plastic bag full of dendrite. Yet home, where the fresh smells of the jasmines and the buttery smells of the sweets from the halwai warm my soul. Home, where illiteracy surfaces as statistics of people in the West dying of diarrhea. Yet home, where when you sit at the doublies of the Patan Darbar Square, drinking 10 rupee cup of tea, you forget all your worries, and the whole world stands still for a moment. Home, where the temple bells ring at the early hours of the morning, and again at the not so early evenings, and again and again and again and again and again until my whole spirit starts to ring in unison. Home, where the roads are not paved with gold, but with potholes, because what fun to tread on smooth pavements, to not trip once in a while and feel human. Home, with shabby houses that smile, slanting but standing through and through the test of time, the narrow labyrinthine gullies that lead you to courtyards of epiphany, that perfect place of imperfection, where not everything is right, but everything will be all right. Hence, I refute hundreds of your heavens to go back home, because home is where I belong, because home is where my soul finds a voice to speak. Thank you. Thank you so much, Yukta ji, for a beautiful poem. May I now call Ms. Momila Joshi ji. Momila ji, हामीसँग आइपुग्नु भएको छैन भने मैले जानकारी पाएँ। त्यसपछि डाक्टर पुष्प ठाकुर जी यदि हामीमा आइपुगिसक्नु भएको छ भने डाक्टर पुष्प ठाकुर जी उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। डाक्टर रामप्रसाद देवाली जी, डाक्टर पुष्प ठाकुर जी आइपुगिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। इस सभागृह के शोभा हमारे महामहिम राजदूत जयंत प्रसाद जी, हमारे श्रद्धेय नेता प्रकाश चंद्र रोहिणी जी, अभय जी, ये सभागृह में उपस्थित समस्त महिला तथा सज्जन वृंद को मैं पुष्पा ठाकुर सादर नमस्कार करती हूँ। मेरे मन की कोमल भावनाएं हैं जो कि लेखनी के माध्यम से पढ़ने में उतर आए हैं। मैं नहीं जानती ये कविता है या क्या है। हाँ, अगर सुनने के बाद आप ताली बजाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी यह आपको भी पसंद आया है। अपने मन में स्नेह का एक उभार आया जो कि आभार व्यक्त करता था उन सबों पर जिन्होंने मेरे जीवन के क्षणों में मुझे किसी न किसी रूप से अनुग्रहित किया था। तो यह स्नेह भावना मैं उन सबों के लिए यहाँ व्यक्त करने जा रही हूँ। उष्ण हवा के झोंकों ने जब वार किया मन पुष्प पर, शीतलता देने आए आप संरक्षण की वर्षा बनकर। बुराई वार करती जब सुंदर जीवन के पल में, बुराई वार करती जब सुंदर जीवन के पल में, अच्छाई बनकर आते आप व्यथित जीवन के क्षण में। निराशा के घोर अंधियारे में ऐसा होता आपका पदार्पण, बदली से घिरे नभ में जैसे हो सूर्य का आगमन। मन मंदिर में मेरे है अब यही कामना, रहे सदैव हृदय में आपके हमारे लिए स्नेह भावना, हमारे लिए स्नेह भावना। अब मैं दूसरी कविता अपनी यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आंखें होंठ कभी जो कह ना पाते, आंखें कह देती वो सारी बातें। गम में आंखें नम हो जाते, खुशी में ये मोती छलकाते,
विरह में सूनी राह निहारते, प्यार में सुंदर स्वप्न सजाते, मन के सारे भेद बताते, आंखें कह देती सारी रातें, करती कैसे आंखों में रातें। फैले जैसे खुशबू हवा में, होती मोहब्बत आंखों आंखों में। फैले जैसे खुशबू हवा में, होती मोहब्बत आंखों आंखों में। आंखें चार हो तो होता प्यार, शर्मा के झुक जाए तो इकरार। करती जीने मरने के वादे, बसती इनमें प्रीतम की यादें। करती कैसे सुनी रातें, होठ कभी जो कह ना पाते, आंखें कह देती वो सारी बातें, करती कैसे आंखों में रातें। आप सबों ने यहाँ प्राय 3 कविताएं सुनाई हैं। मैं तो 2 ही लेकर आई थी, तीसरे का जन्म अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, वो भी मैं यहाँ पर रखने जा रही हूँ। मन के आकाश पे भावनाओं का रंग लिए, मन के आकाश पे भावनाओं का रंग लिए, प्यार का इंद्रधनुष जब निकलेगा, सोचो प्रिय दृश्य यह कितना सुंदर कितना मनोरम होगा। मन के सरोवर में जिंदगी की विषमताओं से प्रेम कमल जब पल्लवित होगा, सोचो प्रिय पुष्प यह कितना लुभावन कितना मन भावन होगा। मन के बीना पे जीवन के तार से सरगम प्यार का जब गुंजित होगा, मन के बीना पे जीवन के तार से सरगम प्यार का जब गुंजित होगा, सोचो प्रिय सुर यह कितना सरस कितना मधुर होगा। स्वप्न यह मेरा जीवन के प्रांगण में जब साकार होगा, तो हे प्रिय हृदय आकाश में यह ध्रुव तारा सा चमकेगा। धन्यवाद। Thank you so much. May I call upon Dr. Ram Satyawani ji. धन्यवाद सर। एउटा सानो कुरो सत्यम जस्तो मन लाग्यो। हाम्रो उद्घोषकले चाहिँ अति सुन्दर मानव जीवन यो लेखनाथ पौड्यालको भन्नुभयो, त्यो चाहिँ धरणीधर पौड्यालको हो। त्यसलाई भ्रम पर्ला भनेर मैले सत्यम गरेको। म चाहिँ 3टा कविता पढ्दिनँ। सुरुमा 2टा टुक्रा पढ्छु अनि एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू बस्नुभएको छ। हामीले बारम्बार विश्वास गऱ्यौँ, बारम्बार विश्वासघात भयो, मान्छे सुध्रँदो रहन्छ। एउटा श्लोक चाहिँ बुढो कुकुरको स्वभाव भन्ने कविताको एउटा श्लोक पढ्न चाहन्छु। बानी सुध्रिसक्यो, बानी सुध्रिसक्यो, पिसाब अवतार हेर्दैन ओछ्यानमा। यही विश्वास लिएर बिस्तर नयाँ ओछ्याइयो खाटमा, बस्न साथ नयाँ सफा पलङमा। थाल्यो नि सुर्क्याउन बुढो कुकुरको स्वभाव बचाउी, छाड्दैन तुर्क्याउन। एउटा सानो टुक्रा, यो हामी सबै सुखको निम्ति धेरै दगुर्दा रहेछौँ। अहिले मैले के बुझेँ भन्दा कि सुख पाउनलाई काम गर्यो भने सधैँ दुःखी भइदो रहेछ, खुसी भएर काम गर्यो भने सुखी भइदो रहेछ। त्यो एउटा बोध गरेर 4 पंक्ति सुनाउन चाहन्छु। कसैले सुखका निम्ति धन सम्पत्ति जोड्दछन्, तपाईँ हामी जस्तै। कसैले सुखका निम्ति धन सम्पत्ति जोड्दछन्, कसैले सुखकै निम्ति धन सम्पत्ति छोड्दछन्। भर्तिहरि बुद्ध जस्ता सुखका खातिर मान्छेले दुःख भोग्छ घुमी घुमी। सुख के हो नबुझ्दैमा देख्छ मानिसको जुनी। मेरा 2टा कविता सकिए। तेस्रो कविता चाहिँ म पुरै पढ्छु। एउटा सन्दर्भ छ, यो धेरै कलाकारहरूबाट प्रस्तुत गरिएको एब्स्ट्र्याक्ट चित्र हेरेर कविता लेख्नु पर्यो भनेर बोलाइयो।
बडा घमण्ड थियो देख्छु म भनेर है गएर हेरेँ मेरो जिम्मामा चाहिँ किरण मानन्दा र एकजना ढङ्ग्याख्या भनेको चित्र पऱ्यो अनि गएर यसो हेरेको त्यो चित्र त एकदम अमूर्त थियो कुकुर जस्तो पनि छ विराट जस्तो पनि छ रुख उम्रे जस्तो पनि छ मन्दिर जस्तो पनि छ मान्छेको जस्तो हेरो बुझी लाग्छ पटक्क बुझ्दैन हैरान भयो अब मेरो बेइज्जत हुने भयो कविता लेख्न सक्दिनँ भन्ने भएपछि म पनि यसकै जस्तो मन परी कविता लेख्छु यसले चित्र लेखे जस्तै लागेर मैले एउटा कविता लेखेँ जसको शीर्षक चाहिँ इतिहासै बन्नु किन भनेर राखेको छु म त्यो कविता चाहिँ पुरै सुनाउँछु हो कि झैँ जस्तो यसो हेर हो कि झैँ जस्तो होइन झैँ पनि बुझे कि झैँ जस्तो ठिक्कै नबुझे पनि अचम्मकै हुँदो रहेछ कलाको भक्त जीवनी हेर्दा हेर्दै कलालाई कला बन्छु तिमै पनि एउटै चित्रमा बोल्छन् एउटै चित्रमा अनन्त हुँदो रहेछ त्यहाँ त गजब रहेछ त्यो एउटै चित्रमा खुल्छन् हजारौँ मनका व्यथा एउटै चित्रमा डुल्छन् लाखौँ जीवनका कथा हजारौँ शब्दले खोल्ने दिव्य सौन्दर्यका छटा एउटै चित्रमा बोल्छन् महाकाव्य महाकथा कलाले धरतीलाई मलाई त्यस्तो अनुभव बहुत देखेपछि कलाले धरतीलाई उर्वरा पार्न सक्दछ चन्द्र सूर्य दुवैलाई धरतीमा झार्न सक्दछ सातै समुद्रको पानी सिरितै पार्न सक्दछ सिँगै धरती उचालेर बुर्कुसी मार्न सक्दछ तर त्यही बेला मलाई सम्झना आयो मेरो देशको गर्भमा छ महामान्छे गर्भमा छ महामान्छे गर्भमै मासिन्छ कि हिमाली वीरको बाटो हिउँमै भासिन्छ कि चिन्ता छ एउटै मेरो सिर्जना मलिन्छ कि जिन्दगी जस्तै नभन्दै खलबलिन्छ कि एक कला अकलालाई कला बनाउने गरी सुकला भर मान्छेमा दिव्य सौन्दर्यले भरी कला बिनको मान्छे सौन्दर्यहीन बन्दछ कलाको स्पर्श पाएमा मृत्यु जीवन बन्दछ यो ज्ञान पाएपछि अन्तिम एउटा श्लोक लेखेँ मान्छेको जिन्दगीलाई सिर्जनाले भरौँ कि म मान्छेको जिन्दगीलाई सिर्जनाले भरौँ कि म कलाको दिव्य सौन्दर्य कला बन्दै छनु कि म सिर्जनाको नयाँ बाटो खन्दै सिर्जनाको नयाँ बाटो खन्दै बाटो बनु कि म इतिहास बनाएर इतिहासै बनौँ कि म इतिहास बनाएर इतिहासै बनौँ कि म धेरै धेरै धन्यवाद रामप्रसाद गेवाली जी निकै सशक्त र मिठो शैलीमा भाषण गरिदिनु भयो अब म बोलाउन चाहन्छु श्री धर्मेन्द्र कर्णजी